लाइव कर देता हूँ। तो हेलो गाइस, व्हाट्स अप? हाला Madrid, कैसे हैं सब लोग? So perhaps today is it's a very heart-wrenching day for the entire football community and the football fans all over the world. In fact, unfortunately, Diogo Jota died in a car crash earlier this morning. So, well, that was too tragic, I guess. I mean, what do you think about this, Shantanu? What are your I mean, thoughts? of course, very tragic. But has there been any other news? कि क्या हुआ exactly? Actually, there have been few updates. So basically, I was reading about it on Twitter. So basically, recently, apna Diego Jota had a lung surgery or something Mm-hmm. like that. So his doctor had advised him not to travel by air, and therefore he was going to live to England for the pre-season of Liverpool. So he thought he should go by road, and that route was something that he used to usually go by. मतलब अगर उसे Mm. इंग्लैंड जाना होता था तो he usually used to take that route, and I guess उसी रूट से वो जा रहा था, and he had a ferry so that was leaving for England. So he was going to take it, and he went with his brother, and then like I guess ये accident रात के 10:30 12 बजे के बीच में हुआ था, and then they tried to, I guess they were trying to overtake a car or something, and then a tire burst out where it was like Mm. बहुत सारे क्या कहते हैं गुलाटियां खा के कार गिर गई near by the highway, and then he unfortunately died alongside his brother. I mean, That's like just 2 or 3 weeks ago, we saw him with Portugal winning the Euros, and then उसके बाद Nations League था, I guess, या mm. Euros था, and फिर उसके बाद उससे पहले जस्ट लिवरपूल के साथ जीता था. एंड इनफैक्ट इवन मोर ट्रेजिक इज दैट कि अभी उसकी 10 दिन पहले ही शादी हुई थी, एंड उसका जो लास्ट आई गेस ट्विटर पोस्ट था दैट वाज कि 22 जून टू फॉर एवर. आई जस्ट Yeah, फील I बैड mean, फॉर हिज फैमिली. obviously, especially दोनों भाई भी साथ में थे, so I feel bad for his parents. And डेफिनेटली. it's obviously he was a very good player, both for Liverpool, Wolves, and Portugal. पोर्टुगल या. Um, but even on a normal level, it's like a huge loss, and especially when it happened. I mean, I don't know, these car accidents are always, very weird. It just sent me back into the time apna, like back when Paul Walker died, way Mm. back in the time, almost a decade earlier ago. And then I guess it's weird, to be honest, I guess. And frankly, I mean, I'm seeing a lot of posts, Joki, they're posting about uh, the video from the particular incident, उस Mm-hmm. particular area की. And I think people should not do that. They should respect the privacy of the family and all that stuff. I mean, वो तो That's होगा ही. really I'm not a not good. journalist, so I'm not very surprised that that's happening. But yeah, overall very sad. Like, of course, Hmm. I, even though I he used to play for. I read about it actually. He was one of the key players ना जिसकी वजह से Wolves जो थी basically Premier League में आई थी, like after relegation वापस Yeah, जब आई he's थी Wolves very. back in I the day. mean, I'm sure Wolves fans love him, and I'm sure Liverpool fans love him. So, True, true, uh, I hope Liverpool sort of takes care of his family and honor the contract at least. जितना true, भी true, उसका true. बचा था, and maybe put his wife and kids on some support plan. Hmm. Well, I believe they'll be taken care of, but it's just that key why nobody can fill that gap. Mm. Yeah, anyways, there were some updates from our camp as well. So before the training, Real Madrid also held a moment of silence in respect of Diego Jota and his brother.
So that was nice. Anyways, so It's let's been let's a, get back to the I guess huh? since Ronaldo and Pepe left, there aren't any Portuguese players in our team. So काफी Yeah. time से actually. पहले Figo भी था बीच में, Contrao था, Fabio Contrao. It's been a while since we had like a Portuguese player play for us. I mean, we are definitely looking for two Portuguese that are currently playing in Paris, but yeah. हाँ मतलब but आएंगे नहीं, of course. अगर Of course, that's true. if we could Anyways, sign with so we should. अच्छा, एक बार आप ग्रुप पे भी टेक्स्ट कर दो that we are going live. मैं कर दिया था. Okay, okay, चलो ठीक है. So let's get back to the main topic, I guess, which is CWC right now. So Juventus का match हुआ and frankly, I saw a lot of people talking about Juventus and saying कि they're going to be an easy opponent. And in all fairness, Juventus was anything but easy, especially their goalkeeper. For I don't even know what to say about him. ये मैड्रिड के अगेंस्ट ही कीपर होते हैं. अरे भाई मैड्रिड के Uh, अगेंस्ट सब लोग प्राइम बफून बन जाते हैं बफून. but the thing is, it was the first major. Uh, एक सेकंड में पोस्ट मैच. कर रहा था. ओके ओके. सुमित भाई, फ्रैंको इज नॉट द हाँ फर्स्ट अर्जेंटाइन. फ्रैंको से पहले अपना निगो पास भी तो अरे अर्जेंटीना का ही भाई है. सुमित भाई, first Argentine after Dimer. Yeah, Nico Paz is also Argentinian. हम्म. Uh, yeah, thing is कि this was an important match because it was one of the first big tests for us. We were playing a big ट्रू. European team, and again, we still ट्रू. don't know what the ceiling is. But since the first half of the Al Hilal game, which was probably our worst performance, I think या. we've just gone up from there. ट्रू. आई लाइक दैट. यार Even इवन. just in the second हम्म. half, we had a lot of improvements, and since then every match we've just become better and better. And even though we just won 1-0, thanks to their keeper या. and the fact that they did not attack that much, they were staying back and ट्रू. parking the bus. We still showed that we can sort of manage. I mean, we should have scored a few more goals, but I think डेफिनेटली. uh, we were showing a lot of good things in the last match. And Gonzalo Garcia को क्या ही बोले. Definitely a positive for us, I guess, in all fairness. I mean, मतलब he frankly, scored what, 3 goals? 3 goals, yeah, already in 4 matches, I and think there assist are. as well. I mean, in the standouts for me in this tournament have been Valverde, Gonzalo Garcia, and Tchouaméni. Like insane performances, all three of them. True. And I guess, did you say Fran Garcia as well, right? Fran is probably the most improved player. Yeah, I definitely, but I mean, I didn't put it in the वैसे तो फिर Bellingham, Fran, even Bellingham, maybe Fuller definitely, को yeah, डाल सकते हैं. So I think yeah. Fran is the most improved player. Something that I love about him, but I think the standouts have been Tchouaméni, uh, Hmm. Garcia, and did I say someone else? Yeah. Valverde. Uh, Valverde. Valverde. Yep. Before we go forward, I want to take this comment. Why our defense looks shaky? There were passes through middle. Yeah, I guess it will be, kind of something जो कि time के साथ gradually खत्म होगा. ये जो क्योंकि हम we are not used to playing high line first of all. And secondly, if you see Al Hilal के मैच में कितनी ज्यादा थ्रू बॉल्स थी, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट टू अगर हम यूवेंटस वाला मैच देखेंगे, नंबर ऑफ नॉट जस्ट द थ्रू बॉल्स, नंबर ऑफ अटैक्स, I guess Juventus के in the entirety of the match was around 9 or 10 at max. उसके बाद तो they were not even able to go past the lines, the penalty area per se. So I think with time this thing will, gradually disappear. जैसे बारसा का था, स्टार्टिंग में उनकी हाईलाइन को कितना वायलेट किया था, इवन छोटी टीम्स ने. So I guess just give some time to the players and they'll do good. What is your point of view about this, Yeah, देखो, Shankar? high line of course खिलाते हो तो there's always the risk that there's a through ball which breaks your line, right? So it's about
अभी तो हमने खेलना इनफैक्ट इन माय ओपिनियन अभी तो वो प्रेसिंग इन हाई लाइन हमने पूरी तरह इम्प्लीमेंट भी नहीं किया बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच इज हार्ड टू ड्रेसिंग इम्प्लीमेंट तो सो आई एकदम थिंक नहीं है, हाँ। ट्रू। Jabi is just going for something that is easy to achieve, and that's good because his aim is to win this tournament. So that's what he's trying to ट्रू see, and ट्रू। his aim is also to see which players can we fit. For example, we kept saying we need a Joselu type striker, and Gonzalo Garcia was right there, right? We kept saying Yeah, that we need a controller, and Arda Güler has been filling that role. I wouldn't say perfectly, but he's doing very well, and I think he'll improve. So, वही at left back, if Fran Garcia keeps performing like this, I don't think we need a new left back. We just yeah, maybe. maybe need Mondi to be fit. Uh, Mm. or you sell So Mondi that. and get Mm. left back, but I don't think that will happen in this window. So, uh, I think that's what we'll try and figure out. Now, in terms of the defense, हमारा biggest weakness change has been Rudiger का आना. Rudiger looks Yeah, a bit shaky, which is yeah. obvious. He doesn't have a lot of match fitness, and he's the most. He's probably not as good on the ball as Dean Hoyinson and Mm. Jarman, so he's the one that Mm. suffers a lot when he has the ball. True. And the fact that he's playing right centre back, so he is handling the most um, weak spot in our Yeah. team because Team. Trent, I think Fran Garcia has been good on both ends. He's been like Carvajal Mm-hmm. basically. Like he's been Yeah, very good in defense, and then going forward, he's been very good as well. yeah. So, but Trent has been again the same issues have popped up. Trent goes forward, Rudiger has to cover for him, and of course we see the positives of Trent. He gave the cross Mm-hmm. to Gonzalo Garcia, but True. then he, Rudiger got exposed because of Trent multiple times. Yeah, So we have true. to live with that, but we have to also find someone who can play at the RCB position and Yeah, handle that. And that's why Rudiger needs to be like very, very good. Otherwise, at some point, maybe we might have to think to replace Rudiger next season or something as well. So true. that position of a right center back is very important for us, even if Yeah. Chamani sort of drops. And Chamani Hmm. का तो क्या ही कहना यार मतलब he's such an intelligent player. I can't believe that we used to keep Chamani on the bench. I mean, it's मेरा दिमाग खराब होता था जब सिटी के अगेंस्ट बेंच हो गया था and we got hammered and then हाँ, uh, yeah. Atletico के against bench हो गया था and then again we got hammered. Like Chamani is completely running this team. He's the pillar, as Jabi said. So you can लिख के ले लो कि there's only one name on the sheet for Jabi, which is undroppable, which is Chamani, which is what should have been under Ancelotti as well, but it took a long time for Ancelotti to realize that. Yes, he had a I dip mean, yeah, last season. yeah. He had a Continue, dip continue. last season, but I think he's back to his best now. So I mean, yes, while we are on the subject of things we can't believe, we were also booing him in the beginning of the season. Matlab, yeah, frankly, yeah, वो I've centre come back at the realization. Bhai, he was not playing at his real position. And to be honest, frankly, after a point of time, I started realizing it's not the players who are the problem. It's really the coach. And I do not mean to, I do not mean any disrespect to Carlo, but the thing is कि टीम एक ऐसी शेप में आ चुकी थी कि वहां पे rather than individual brilliance या फिर player talent, we needed some sort of a structure जो कि जैसे ही शाबी आया उसके बाद हमें दिखा कि there was some sort of a confidence. Players were playing in their position and they started giving, I guess, let's say, talk about Bellingham. Bellingham was like, जो मजदूरी होती है, was doing that. And then वो ऊपर नीचे जा रहा है flanks पे up down and then pressing the ball. बट उस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ. अब यू सी द सेम प्लेयर इन शाबी सिस्टम एंड यू सी कि बेलिंगम कितना लीथल है. डिड यू सी एक तो अपना विनी का जो गोल हुआ था उसमें बेलिंगम की थ्रू बॉल, दैट वाज Mhm. क्रेजी. एंड देन लास्ट मैच में यूवेंटस के अगेंस्ट भी बेलिंगम ऑलमोस्ट स्कोर्ड अ गोल, इफ यू रिमेंबर.
Yeah, I Second half mean, was that. him, yeah, Raj, people can put. That's why I say you can keep trying to put the blame on the board, the players, Mhm. whatever. Last season, in my opinion, 60 to 70% of the blame was on Ancelotti and the coaching staff because this is more or less the same team. What we've replaced Yeah, is precisely. Trent and Dean. Awesome. Yeah, Dean, that's it. And yes, they're important signings, but I don't think they're the most important players in our team right now. true. So Gonzalo Garcia was available. Fran Garcia could have played every game. Yeah, Okay. Charmany was there. Valverde Guler was there. You stuck with yeah, Rodrigo. You did not even think about Gonzalo Garcia. And अभी एक yeah. इंटरव्यू आया था Davide Ancelotti का and it was embarrassing because हाँ, उससे पूछा था कि oh, do you think if Mbappe was injured you would have tried Gonzalo Garcia and he said yes but हमें सबको पता है कि Rodrigo is the one who would be starting regardless of what happens, right? It took Alonso one game to realize that Rodrigo is not going to fit in this team right now. yeah. So, I mean, when do you remember where we dominated the match, all the matches that we've seen since now? I think Al Hilal was the only one which we didn't dominate Yeah, completely, except the second half. The first half we didn't yeah, dominate. The second half we dominated. definitely. They had to sit back. Every game we are dominating the ball. We are playing with purpose, and that was completely missing last season. Last season we couldn't even dominate like small teams, let alone the big Not at teams. all. So Matlab, we were hardly able to score a single goal, and that too came out of, some mistake that was done by the other team. mistake, individual brilliance. That's how we scored last season. And I mean, of course, I know अगर उसको Ancelotti को cruise type players है तो अभी भी वो last season अच्छा कर लेता. But it's just without Yeah. cruise type player. इससे तो मैं Davide Ancelotti loves Toni Kroos, and I keep saying कि of course if he was doing my dad's work for him, I would love a player that much as well. So. वही बात है. Of Definitely. course, I mean, Ancelotti is still a legend for what he's done. I think, Of again, course, of course. I don't think he could, any other manager might have been able to do like the two Champions League that we won in the last 4 years. Yeah. But at the same time, I think the club also realized that we need a change. We need someone who plays with some structure and gets. I don't think we've dominated games in a long time. I think the Benzema season was arguably the one that you can say that we started dominating. But now we are playing like we are Real Madrid. Like you should be scared to Frankly, play. even in the Benzema season, we didn't used to We dominate. were We used to we win were in the end. coming back. Yeah, yeah. So I mean, now we are playing like Real Madrid. That team should be scared to play against us. Okay, so Acha, I'll tell you one thing. So even today morning, we were having a conversation in the group chat, general Hmm. discussion wale mein. So I was having this chat with a guy, and we were talking about Vitinha, and then I realized कि if you remember 21-22 season mein when Kamavinga came into the club, he had Hmm. a role of a super sub and he worked more as a ball progressor. So what do you think if Kamavinga takes that role? And Yeah, I देखो, frankly believe he can do something like that. I think Kamavinga, it's it's not clear where Kamavinga fits right now, in my opinion. Hmm, And hmm. but the fact that Javi has been able to improve all our midfielders, which I predicted True. in the beginning, कि Javi आएगा and we'll see. I did not expect such a massive increase so suddenly. But I knew Hmm, that our midfielders would start playing well. But look at every midfielder, he's playing to his strengths. Javi knows that true. he sees Valverde as a player who attacks the box and makes those Yeah. runs. And that's what we are seeing. And when have we seen Fede Valverde score 2 goals in 2 games? And I I guess. mean, maybe that one season where he scored more than 10 goals, कभी हुआ होगा, When Ancelotti had वो asked it. कभी बाहर से मारे, Yeah, right? So precisely. He used to come from the midline. exactly. Valverde is literally attacking and like doing. I mean, I feel like Valverde is playing like the way he's supposed to play now. Hmm. Bellingham, he's And not he's restricted. been winning balls for us as well. Exactly.
And he's a So yeah, cheat that's code for Jabi. I was 100% sure that with Valverde, Jabi can do so many things because he can keep pressing hmm, without getting true. tired. You have Yeah, Bellingham as well, who's playing further up. Guler, he's dropped पीछे कर दिया उसको ताकि yeah. uh, he gets more of the ball, and Chamani then either drops back into between the centre backs or comes into midfield. So it's such a perfect system for the midfielders कि मजा आ रहा है देख के. And frankly, if you see, Kamavinga can also, play that Valverde wala role. Matlab, he can run for 90 minutes and then at the same time press all the players, make those crucial tackles because he's done that over time. I mean, let's not look at last season because that was something which didn't go good for most of the players in the team. But frankly, Kamavinga is that sort of a player जो कि ये कर सकता है Valverde वाला role as well with more kind of like precision in the sense I guess passing के terms में बोलूंगा वो at the Yeah, same I'm time. 100% sure कि Jabi is already thinking कि अच्छा Chamani को rest देना होगा. Another thing that we couldn't expect from Ancelotti, that Jabi has Yeah. already started thinking कि Chamani हर game नहीं खेलेगा. तो अगर Hmm. Chamani is benched or rested, who needs to play? Hmm. And I think Yeah, Kamavinga makes sense. probably is the first name to replace Chamini there. He's intelligent. He can make tackles. He can read the game. Yeah, I think he can be molded to be first of all be Chamini's uh, uh, replacement. replacement if ever needed. Second of all, instead of I don't think you can replace Valverde because Valverde right now is doing what Valverde does, and there's not a lot of people who can do that. So I think. Uh, he will probably, in my opinion, do something like Guler is doing. Okay, I think he's the one who can sort of control the game for us. Yeah, Kamavinga. obviously. What can happen is that once Bellingham has his surgery, Guler will sort of play uh, where Bellingham is playing, Cam. and maybe Okay, we okay, try okay. Kamavinga as a controller. I think so because I Yeah. think he has the ability to do it. But not a lot of people have asked Chabi about this, so this could have been an interesting question. Maybe Kian asks that soon. So I hope someone asks Jabi ki how does he plan to play Kamavinga, because I'm really looking forward to finally see Kamavinga be. He's a great player, and it's been Of a waste course. again by him playing left back. I don't know where. So we really need to sort of find a place for Kamavinga in this team. And Kamavinga ki through balls are also a thing to watch. I mean, they are crazy. I remember लास्ट सीजन अभी अपना जो निकला है इसमें एक मैच में जब कार्लो को रेड कार्ड मिला था तो डेविडे डेविडे took charge of the team and उस मैच में कामाविंगा had a different role and that Uh-huh. role was more of a ball progressor than a CDM or maybe a left back. Mm-hmm. And उस मैच में कामाविंगा played so beautifully like I can't tell you that मतलब I remember that उसके बाद फिर उसे इंजरी हो गई थी so कुछ बोल नहीं सकते थे. Yeah, he needs to stay fit as well. And in fact, don't forget that I won't like rely on Ceballos, but at the same time, I think if he's fit, he will also be Hmm. one player that can bring a lot from the bench because he can be like what Kovacic was us for under Zidane. कि Modric को जब rest देना है तो Kovacic को खिलाओ. I think Ceballos would be something similar that you want to rest someone, bring in Ceballos. We also have Brahim, so if Bellingham gets injured for a while, Brahim can play there, in my opinion. So there's a lot of things that's possible. I think the only position which is not 100% set is Guler's position. He's been playing well, I know, but at the same time, I Hmm. think he gets a little overpowered because he's not physical enough. So Precisely. he I has mean, that the was my talent. point as well. मतलब Guler is one of the key players in the team, but one downside he has is that वो physically और defensively कुछ provide नहीं करता है. That is the biggest drawback of Muller, I guess. I mean, if Yeah. you remember last match में second half में यूवेंटस का एक अच्छा चांस आया था तो उसमें क्या हुआ था कोलो मुआनी went into the penalty area and then Mm-hmm. somebody blocked his shot उसके बाद गुलेर was picking the ball तब तक कोलो मुआनी क्या नाम है पीछे से he pressed and Gulel lost the ball
right, in Yeah, front of the box. yeah, फिर yeah. that too was something जो कि वो physically overpower हुआ था. If Mm-hmm. there was someone like Rudiger or Valverde even, वो Mm-hmm. चीज नहीं होती. So that is something we have to look at as well. क्योंकि physically Arda Güler doesn't really provide us any balance defensively. That's one drawback of him. But ठीक है, that I, can be, I guess, yeah, let's see. I forgiven. think what the direction we are going is that there is no midfielder that we'll sign. So True. I think Nico Pass का भी मना हो गया है. I think maybe next season Nico. I think it's the right decision. Maybe next season Nico Pass comes when we maybe sell हाँ हाँ. Ceballos, decide what to do with Hmm. Kamavinga because I think if Kamavinga doesn't play well, there's a chance that Hmm. इस season के बाद we try to offload him and get someone else. Hmm. So वो होगा. Uh, I think Swaroop bhai, welcome all our whoever's the members that have joined. I think Saif bhai, BS, welcome. But I think we need another centre back. Either we should buy or get it from the academy. I think Swaroop bhai अभी खरीदेंगे तो नहीं because इतने सारे centre backs पड़े हैं. I know useless True. है but है. So Militao is there, Alaba is there. Um Thankfully, Sensio. Malay are there, but there's Asensio, there's Dean, there's Rudiger. So we have five centre backs and then Charmany, which maybe is five and a half. So I There think are two honestly, center backs from Castilla as well. Two yeah, to there's three. Jacopo Levan, Martinez. Jacopo Yeah. Levan and John Martinez as well. So कोई खरीदेंगे तो नहीं. It's just trying to find कि I think Javi को जब भी time मिलता है वो three at the back पे shift हो जाता है. So I think he will try and find the third centre back in the setting. There's also Carvajal who was asked actually Yeah. recently whether he'll be okay playing centre back and he said yes. So I hope at some point we get to see that because I think that can actually work. I still want to see Yeah. Carvajal play. I'll be sad Of once he course. retires. He's one of my favorite players. So centre back to नहीं आएगा स्वरूप भाई. I think that's more or less confirmed. Academy से आ सकता है of course, but खरीदेंगे तो नहीं. Saif bhai का एक question है. Let me just take it. Hmm. Saif bhai is asking who should be starting in next match, Kylian or Garcia? That's a good question. Like Mbappe wasn't great once he came on, so I don't know how match fit he is. And Gonzalo is the best player right now in terms of maybe in the tournament actually. So Yeah. uh, apart from maybe Chamini actually. So that's what I'm thinking. Maybe it's possible that Jabi sticks with Gonzalo and then gives maybe a bit more to Mbappe. It's a I possibility that we if also you try for. If you ask me, I guess he will start Garcia only because even Kylian last match में he didn't seem so good because obviously match fit अभी नहीं हुआ है वो, and Yeah. besides that quarter finals में आ गए हैं तो I guess we should wait until until the semi-finals, which is most probably going to be against PSG. So we can play him then if he's match fit, I guess. And Yeah. I would still not bench Garcia, to be honest. Yeah, but 4-3-3 has not been working for us, so we'll have to think of क्या Hmm. खिला सकते हैं. Because I'm not sure Yeah. who can be dropped from this team right now. हाँ, अभी तक तो ऐसा कोई प्लेयर It's है also नहीं जो. it's also possible कि Vinicius I think yellow card खा जाए और वो suspend हो जाए. So हो सकता है कि Vinicius की जगह वहाँ पे खेले and then Garcia still plays. So I think Mbappe will take some time to come back because he's probably not training with Jabi as well. So maybe he Yeah. doesn't know what Jabi wants from him. Uh, there was another very good adjustment that we saw that in the match. Ki I think Vinicius was trying to play central, but given that हाँ. Juventus had parked the bus, Vinicius was going hugging the On the touchline wings. more, which Javi said that we were Yeah. trying to explain, and that's kind of how the goal came. Ki Trent ने wing Yeah. से ball डाली and हाँ. Gonzalo scored. And that's a very good adjustment. The second adjustment was also in between. I think once we realized they're going to park the bus, we kind of pushed Germany forward and we asked the midfielders to take more shots.
and that's why Yeah. a lot of them actually scored multiple times. I think Charmany should have scored a header, काफी free था वो, and then हाँ. Valverde had a couple of shots blocked. So Yeah. very interesting कि ये literally mid game changes जो हमें कभी नहीं दिखते थे. We are seeing. This game reminded me of Arsenal's second leg, right? We needed a Hmm. goal and we had no idea how to play against a low block. And हमने एंड्रिक को भी लाके उसको राइट में खिला रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे. And then we could have used someone like Gonzalo Garcia in the center and put in more crosses because we knew Arsenal is backing with us. So these are True. the kind of things that we'll see with Zabi, that he will prepare for different games differently. Of course, there's more chances of things going wrong because suppose if you get something wrong tactically against someone like PSG, you might lose. So Yeah. Carlo uses a very okay, this is tried and tested, let's use this. Whereas Javi and even Zidane used to do this. That try something different against these teams. If it works, we win. If obviously there's a chance that it doesn't work. So we will see us play differently in different games. Yeah. I guess about on that note, I also want to add few things. Firstly, though, about Vinny. So, did you notice Vinny's attitude has changed? Like, apart from the first match, वो जो dive वाला scenario था जिसमें उसे yellow मिला था. Apart from that, Hmm. if you have noticed, Vinny का जो attitude है towards the game, towards other players, referees, he has been, more on the cool side. Like he's not making a lot of complaints, like comparative to what he used to make a while back. अब इसने वो चीज थोड़ा सा कम किया, and he's focused more onto the game. So that has been quite a positive attitude change जो विनी के अंदर आया है. I have no problem I if think he's out of form, but I do have problem when he makes, some sort of complaints at every other challenge. That seems kind of rash. I guess perhaps that's why a lot of people also hate him, which I do not find, very reasonable, but okay. yeah, I mean, like these kind of attitude problems. I mean, it depends. सबके लिए different होते हैं because I don't know if you know that tennis player McEnroe. He used to like Hmm. fight with other players with the empire. He was a tennis player. He used to fight with this Hmm. everyone, but inside he was very calm and he used to basically uh manage. Tennis is a game where you need even more concentration than Vinicius. So Hmm. uh, he in his chaos he still managed to keep calm. So अगर वो actually Vinicius ये सब complain करके भी अपना concentration नहीं खोता है, then it's fine. But that's the issue कि sometimes he does lose concentration. But obviously Hmm. right now Javi might be working with him to sort of उसकी decision making अभी भी थोड़ी खराब थी. I think he could have done something differently and maybe we could have but anyway ठीक हो जाएगा. I mean ये सुधांशु का सही point भी है कि it's Spain where the issue is. No one's बात racially तो ठीक abusing है. him right now. And Spain True. may when they start doing it, and of course for good reason. When that happens, I have no issue. He reacts the way he reacts. So let's see once we go back to Spain. But again, Vinicius is already showing that he's improving. So That's very good. fine. Sumit bhai. सुमित भाई मतलब 100% तो नहीं ये बोलूंगा. मतलब साल्जबर्ग के अगेंस्ट स्टार्टिंग से तो हम अच्छा कर रहे थे. आई थिंक Hmm. जुवेंटस के अगेंस्ट वी डिड कंसीड अ फ्यू चांसेस बट ये थोड़ा होगा बिकॉज अभी आई मीन वी आर स्टिल forgetting that we are only 4 games in and we've already seen such a massive improvement. So धीरे धीरे ये सब चीजें आएंगी. So we shouldn't be too worried about this. Yes, I think playing PSG would be the biggest test, Yeah. and hopefully we reach that. Of course, Dortmund के against कुछ भी हो सकता है, but let's see how he prepares against PSG. We need to try and dominate the midfield. So how he negates Vitinha. I have a feeling he will put someone like Valverde on Vitinha to try and negate him. So
That's a good thing. We'll be looking. It's been so long since I've been excited about football matches, Real Madrid football matches. Like I'm really looking forward to games to see what will happen. Even if they end up 1-0, I don't mind. But it's just you see things from your players. You think, I mean, I don't know. There were people on the group saying कि ये professional players हैं, इनको coaching की जरूरत नहीं है, ये सब है. बोला, yeah, they haven't reached their peak yet. So if you can learn from Yeah. someone like Javi Alonso, why will you not learn? So we've already seen all four of our midfielders improve. So Mm. you Even, can and Garcia improved. Everyone's playing to of their course, strengths. Garcia to bhai sahab, I guess it is the same Garcia that we, kind of called back from Valladolid. Valladolid, Vallecano, sorry, Oh, Vallecano. Rayo, Rayo. Not that, by the way. Apart from that, I was going to something, it slipped off my mind. Acha, हाँ, about the 1-0 win. So, see, the reason why we are satisfied with this 1-0 win because ये वो वाली 1-0 विन नहीं है जो एंcelotti के अंदर होती थी जिसमें हमारा इकलौता 5 अटैक होते थे 5 में से 4 जो होते थे इट यूज्ड टू बी लाइक बहुत दूर से कोई शॉट मारो एंड एक जो ऑन टारगेट होता था वो गोल होता था दैट वाज वेरी बोरिंग बट अभी Mm. देखोगे तो देयर इज टू मच क्रिएटिविटी इन द मिडफील्ड there is passing going on, there is a link up play. So you don't know when the next goal's coming. But under Ancelotti, it was like कि हाँ सामने वाले ने गलती की तभी गोल आएगा. So it was kind of like monotonous after a point of time. Or But okay, individual brilliance. I mean, we of all our course, goals have been team goals. There's no goal that has been individual brilliance. That's the true. key takeaway. It Every was it was either fucking the goal that assister we've or the scored, attacker. Yeah. every goal that we've scored, it's the same. I mean, tell me one goal that was individual brilliance. None. I think Okay. Next question. Valverde ने ट्राई किया था बाईसाइकिल मारना वो हो जाता I saw इंडिविजुअल. that was crazy, bhai. I saw that and I was like, that was just crazy. And you should put that Juventus ka keeper out of contract for stopping that, bhai. Matlab, I was like, if that had happened, na, Juventus should have just called quits on running the club because two bicycle kicks from the same club, damn, crazy. Anyways, so yes, this comment. First of all, अभी जो अपना गोंजालो गार्सिया ने हेडर मारा था दैट वाज आई गेस पता नहीं मेरे ख्याल से एक नहीं दो नहीं सीजन में पहला हेडर होगा जो हाँ हेडर इन द सेंस की जो कि असिस्ट किया गया और नॉट फ्रॉम कॉर्नर्स सेट आई पीस थिंक वाला हेडर बेलिंगम नहीं मे बी बेलिंगम मारता था बट विनिशियस ने मारे थे मैं मे बी वो जो एक शोल्डर से लग गया था होजेलू अच्छा हाँ विनिशियस. गिर के या रिमेम्बर बट वही दैट इज द थिंग ना कि it's been something like we don't pose any sort of threat. It was the case from last 2 3 season. But if you see this thing has changed and I guess Sumit bhai it will take some time क्योंकि all of a sudden देखो हमारे जो पुराने टीम्स के प्लेयर है they have no fucking clue कि headers से हम गोल्स मार भी सकते हैं अपार्ट फ्रॉम चुआमेनी लास्ट सीजन एक दो गोल दो तीन गोल आई गेस उसने ऐसे ही एक दो गोल्स आई गेस स्कोर किए थे हेडर्स के थ्रू बट अपार्ट फ्रॉम हिम आई डोंट थिंक कि रुडिगर इज एक्सट्रीमली बैड ऑन सेट पीसेस के टर्म्स में सो आई गेस I'll say just give the team some time and we will be dangerous from set pieces as well. जैसे आर्सेनल का एक सेट पीस वाला सीन था भाई साहब लास्ट सीजन प्रीमियर लीग में आर्सेनल के कितने गोल सेट पीसेस से आए हैं that two corners specifically. So Yeah. time though, so I guess it will improve. Yeah, I think Chamini almost scored on the corner. So I'm sure we will improve. So Hmm. don't worry Give too the much time. about this. And also, I guess we still need to treat it somewhere as a pre-season only. Because you cannot forget the fact that it's just been 4 matches since Shabi has come into the Exactly. team, taken charge of it. I'm So yeah, sure we will have set piece routines and everything ready as well. true. Acha, okay, let me take more comments. ये तो I guess we all know. Still, if you want to answer this, Shantanu Bhaiya. Yeah, let's see. I mean,
I think the club, जहाँ तक मैंने देखा Twitter पे, the club has said कि जिसको भी जाना है, get a good offer on the table Hmm. and then you can leave. So, True. uh, I think in this team he's fallen down the order कि अगर Vinicius और Yeah. Mbappe में से कोई injured है, then Gonzalo Garcia is the next guy, and Hmm. then it's Rodrigo. So I don't know how he's gonna take it now. Uh, एक और चीज एक्चुअली मेरे को इससे याद आई है कि every player is saying that Javi is talking to him personally and stuff. So this is the fact that Javi is trained by Ancelotti, Pep, Zidane, who else? I don't know. All are यही थे very मेनली तो. Yeah, the fact that he also has like elements from Ancelotti, he knows how important man हाँ. management is, and he's been True. talking to everyone personally and making sure they're, doing fine. So I don't know what's in store for Rodrigo anymore. I don't think it's on the right wing any for sure. We are not going to drop a midfielder to play Rodrigo unless maybe some games Definitely. require that. And I don't know how okay he's going to be like a backup for now. His position looks like he's a left wing backup for Vinicius. When Vinicius is tired or when Vinicius needs to be subbed off, Rodrigo will be brought on. And So Mbappe too. yeah, just to play on the left. So Yeah. so right now that's his role. If he's okay with that, sure, I'd love to have him still. Uh, Hmm. But I think we're forgetting that we'll have Franco as well. So I mean, he definitely, Yeah. if Javi is kept saying कि वो directly first team में आएगा, तो if Franco also starts playing, it's gonna be very hard for Difficult for Rodrigo to him. find time. So I have a feeling he is most probably leaving. He will most probably go to Arsenal, in my opinion. That's my prediction looking Okay. at this point. Like the Next stream, guys. question Thank you, is, Manasai. Manasai is always there telling people ki like the stream. Hala Madrid. Hala Madrid bhai. Okay. हाँ next Next question भी question है again. थोड़े और start कर लेते Yeah. So yeah, this one. Starman bhai ka. हैं एक सेकंड I'm just starting मतलब you can talk about this. I'm just starting more comments. Okay, okay, okay. So अच्छा, starting from सुमित भाई की कमेंट. सो हाईलाइन खेलने के लिए थोड़ा एग्रेसिव प्रेस करना पड़ता है जो हम नहीं करते. भाई आई एग्री विद यू. हाईलाइन के लिए एग्रेसिव प्रेस तो करना ही पड़ेगा. एंड अगर बिना प्रेस किए हाईलाइन खेलेंगे तो हर गोल. हाँ, आई आई एग्री विद यू बिकॉज द प्रॉब्लम सो फार हैज बीन कि somebody wins the ball near the मिडफील्ड वाला एरिया अपना. एंड उसके बाद एक दो बंदे प्रेस करने जाते हैं बट यूजुअली ये होता है कि एक दो थ्रू बॉल्स के बाद सीधे डिफेंस को काटते हुए एक थ्रू बॉल निकलती है एंड देन वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंसीडिंग वन गोल. सो इस चीज के लिए तो आई एग्री विद यू कि हमें थोड़ा सा और ज्यादा एग्रेसिव और आई गेस एक्यूरेट होना होगा प्रेसिंग के साथ इन ऑर्डर फॉर अस टू in order for the high line to work. So I agree with you here, but I guess again, give the lads some time, perhaps they will improve. I think कि ये सारी चीजें तो with time ही improve होगी क्योंकि आप एक बार में नहीं सिखा सकते हो कि एकदम accurate pressing कैसे होगी and how would you anticipate कि कैसे प्रेस करना है, कहाँ पे प्रेस करना है, कहाँ नहीं करना है and stuff like that. So I guess we should Yeah, just wait on this. yeah, Samit bhai. I mean, of course, high line is easier to teach than pressing as a team. But I think Javi has realized it's hot. Players are not Hmm. fit. There will be injuries if they start running without training for it. So pressing Yeah. is something you will see very controlled manner में.
We will randomly press a little bit to win the ball back, and which we've seen actually. बीच बीच में press करके हमने randomly ball जीती है, but you will not see consistent pressing like Liverpool type pressing. I Yeah. think the idea is that whatever you do as a team. So yes, we get a little bit exposed by playing the high line without a press, but at the same time, you should see where our center backs are when we have the ball. We literally, the center backs are in the half outside the box, which is crazy. Like I love to see that. Like so aggressive compared to when we used to score one goal under Ancelotti and we used to start sitting back. Here we are playing Yeah. like our center backs are right at the other penalty box. So we will see like a lot of these things. Calm down on the things that are not working right now because everything will take time to fix. He's trying to fix the things that are easy to fix to win this tournament. Yeah. So I'm sure he will prepare for PSG. I'm sure we'll see like a lot of long balls against PSG where we're trying to take advantage of their high line and stuff. So he will prepare for PSG and let's see what he has in mind. And I mean PSG, in my opinion, again you can keep saying that PSG got treble doesn't matter, blah blah blah. But they've been like a very good team for a long time. It's just that they were not able to win the UCL. Now they won it with a very good team performance and very good structure. So give them their props. They are the best club right now in Europe. Uh, and the idea is to dethrone them. Let's see if we can do it. Simple सी I बात think है. one more thing I'd like to add to this would be the only two seasons when PSG weren't doing so fine. I guess were the seasons when a certain player, हाँ transferred to मतलब PSG. I mean I won't say उसकी गलती है but हाँ मतलब उसने PSG को सिर्फ ट्रेनिंग ground समझा था. And but at the True. same time having Mbappe roaming around like that कि वो राजा है वहाँ का और then Messi को add Uh, कर दो and then Neymar. I mean, it was never going to work without a yeah, proper manager. definitely. So I think Mbappe cannot do all of that at Real Madrid. He's not the king. We have Gonzalo Garcia ready to bench Mbappe if required. So uh, Mbappe hopefully will play the way that Javi wants him to. I think that's my biggest concern for this season. Can we get Mbappe to play? I had no worries about Vinicius because Vinicius always wants to do the best for the team. Hmm. He used to press. He used to try and come back and win the ball. He used to do Hmm. everything that Ancelotti told him. Last season was different because we wanted to play on transition and then we didn't ask Vinicius and Mbappe to do anything. So I have no Hmm. doubts that Vinicius would be ready to press, but Mbappe का मुझे अभी तक पक्का नहीं है. Next question. Next question, I guess it's more of a statement. Jude and Arda both were angry at each other in the match. I guess हाँ एक ये इस सब चीज के लिए I would also one thing I will say कि क्या नाम है Arda तो he's kind of like the youngest one over there. So it's only natural for the other ones to be mad at him if he makes some sort of a mistake. That's okay, frankly. हाँ हम जूट को इतना वो बोल रहे हैं जूट भी 20 है आर द 19 है तो हाँ ऐसे नहीं है कि ज्यादा डिफरेंस है बट दीज थिंग्स हैपन ऑन हाँ द फील्ड आई एम श्योर इट्स हाँ नॉट अ बिग रजत भाई भी ओके आए हुए हैं रजत भाई अच्छा आ जाते स्क्रीन पे हॉला मैड्रिड करके चले गए I don't have faith in LCB. हाँ आ जा भाई थोड़े टाइम के लिए आ जा After the Hilal game, ये वाला. या सुधांशु Okay. भाई I think given that it was still, we played the Hilal game 70% as Ancelotti's team and 30% as Gavi's team. So वही issues थे जो हमने पहले देखे थे, right? And then suddenly in the next game they were fixed. So I True. don't think anyone doubted that. I think everyone was sad that Valverde hasn't improved or is playing to his full capacity because he's probably the oldest midfielder. कितने साल का है Yeah. वालवर्डे? 24 or 25, I guess. I think he's older than Chamani and Kamavinga. So I think he's the oldest midfielder we have now. So he should be at his peak.
he's basically Yeah, the captain when no one's on the pitch. So, I mean, big responsibility, right? true. So, Next one is about this. Bhai, it takes a lot of time, first of all, to make good use of a player like Trent. I guess uski passing, now we are past that point that we should praise, and even we should talk about his passing. We know that he makes those kind of passes जो कि बहुत crazy होते हैं. But at the same time, it takes a lot of time for the coach and for the team to kind of क्या कहते हैं उसे, एक लिंक अप बनाना बिटवीन प्लेयर्स, एक वो अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन जो होता है ना, इट टेक्स टाइम. सो आई गेस यू शुड जस्ट वेट, गिव देम सम टाइम, सो दैट जब एज अ टीम ये लोग डेवलप हो तो फिर ये सारी चीजें छोटी मोटी जो है, कम्युनिकेशन वाली जो है, लिंक अप प्ले हो गया, all these things would be gone, I guess, by October comes, by the time October comes. What do you think about it, Shant Media? hmm? यार Yeah. वही, हाँ, मतलब जो तूने बोला, बट आई मीन ट्रेंट भी अभी इतना कुछ इम्प्रेस नहीं किया. आई थिंक इट गोज बोथ वेज. आई थिंक Javi knows that Trent can play as an inverted Hmm. fullback, but we will see the best of Trent once we fully play three at the back. Hmm. हाँ भाई, हाँ. हेलो भैया, कैसे हो? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, क्या हाल है? भाई मैं देख रहा था स्ट्रीम, मैंने देखा राज बहुत पका रहा, तो मैंने कहा आना पड़ेगा भाई। आ अरे जाओ भाई, यार, आ जाओ. राज ने एक ही मेरा सेंटेंस में 8 बार बोला प्रेस 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 प्रेस। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसकी सॉरी. टेप क्यों अटक गई है? फ्यूज उड़ गया है ना घर पे. अबे भाई, गाइस, इलेक्ट्रिशियन पता हो तो भिजवा देना घर पे. अब तू कर लेना खुद से, क्या नहीं होगा, यार, ज्यादा से ज्यादा नॉट. झटका लग जाएगा, इससे ज्यादा क्या ही हो जाएगा। बिल्डिंग का सारा झटका मेरे को लगेगा ना. और पर क्या चलो डिस्कशन ठीक है. चल रहे हैं? अभी तो बस है, कमेंट्स ले रहे थे. कमेंट्स ले रहे थे, बट तुम बताओ भाई, तुम आए नहीं हो अभी तक जब से जा भी आया है. नहीं, जा मैं भी आया आया था तुम, बीच में चलो. देखने। समय भी मे भी मैं नहीं था. हाँ, उस दिन हम दोनों नहीं थे लास्ट बेसिकली। वाले में आए थे, हाँ. उस दिन मैं सिर्फ बकचोदी करके गए थे हम लोग। क्योंकि शांतनु नहीं होता तो सिर्फ बकचोदी हो जाती है अच्छा, ये भाई। सुधांशु मैंने का वैसे कोई भी, कमेंट ये था. हाँ, ओके वैसे मैंने ओके, हो गया पिछला ये. ही गेम देखा है, इससे पहले वाले मैंने गेम्स देखे अच्छा, नहीं थे। अरे कैसा भाई फील हो रहा सब. है आपको एंसेलोटी के बाद ये देख के? लग रहा है हमारा मुझे क्लब है ये. मुझे कंट्रोल फील हो रहा है, कंट्रोल। मुझे लग भाई, रहा है कि वी नो व्हाट वी आर डूइंग, और हमें दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, बस हम हाँ. भाई ऐसे नहीं मैंने कर रहे। मैंने साल्जबर्ग वाला नहीं देखा था, बिकॉज मेरा टाइम वो 2 AM था. बट बाकी ओह. मैंने उसके हाईलाइट देखे थे. बट देखो, स्टार्टिंग से देखना चाहिए था भाई. अल हिलाल ऐसे लग रहा था अभी भी आंचेलोटी की टीम खेल रही है. ठीक है, सेकंड लेग में, सेकंड हाफ में चेंज हुआ. एंड देन अगले 3 गेम ऐसे खेले हमने जैसे कि मतलब बिल्कुल ही हाँ, वो चेंज वी हो गई डोंट पूरा. रिकॉग्नाइज दिस कॉल. ट्रांजिशन होता हुआ दिखा है ना। एक काफी चीज जल्दी, बोलूंगा. इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. जब बार्सिलोना के अगेंस्ट हमने ला लीगा वाला 11 मई को मैच खेला था, तो उस वक्त मैं, शुभम भैया और रजत भैया के ही घर पे थे. तो जैसे ही हमने 2 गोल मारे ना, 2 गोल मारने के बाद रजत भैया ने बोला चुप हो जाओ, अभी तुम लोग सेलिब्रेट मत करो, यहाँ से भी हार सकते हैं हम लोग. ठीक है. एंड अब एक गोल लगता है ना, एक गोल लगने के बाद भी ऐसा लगता है कि टीम एकदम सही हाथों में है. अभी बस अगला गोल हम मारने वाले हैं, देखो कंसीड नहीं अब, करेंगे, मारने जैसे वाले हैं. जैसे मैंने उस दिन बोला था वैसे मैं भी बोलूंगा, अभी भी ज्यादा मत चढ़ो। अभी भी हार हाँ, सकते प्री हैं। मतलब मैच्योर हैप्पीनेस. आई थिंक हम हार किसी से कभी भी सकते हैं. बट आई थिंक हाँ, true. बट पॉइंट है कि हम जीत भी कभी भी किसी से सकते हैं। जो किसी ने एग्जैक्टली. क्वेश्चन हम्म. पूछा था कि कैन वी रियली बीट पीएसजी, भाई देखो, रियलिस्टिकली दिस टीम कैन बीट एनीबॉडी भाई, इसमें तो कोई किसी को हम्म. डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, भाई, पोटेंशियल। ऑन पेपर वी आर स्टिल बेटर देन एनी स्क्वाड. एंड दैट्स व्हाई हमें इतना हाँ, लास्ट सीजन का बुरा लगता है कि चाहे तुम जितना भी रोलो कि साइनिंग्स नहीं हुई, भाई टीम तो तब भी बहुत अच्छी थी. और भाई, और मेरे को तो देखो इम्प्रेस करने के मामले में देखो, पिछले मैच में तो गुल्लू बहुत सही खेला।
वो तो खैर सबको दिख ही रहा था। गुल्लू गुल्लू अच्छा पर खेल रहा है, बट हम वही मेन बात कर रहे थे फ्रान कि गार्सिया इज अ भाई डिफरेंट प्लेयर फ्रान भाई। वही मैंने बोला, प्राइम मोस्ट मार्सेलो आ इम्प्रूव्ड चुका है। प्लेयर फ्रान गार्सिया। किसने सोचा फ्रान था कि इतना अच्छा खेल सकता था? अब मॉमी पता नहीं लवर। यार, वो इतना एक्सपोज हुआ नहीं है, किसी ने इतना नहीं किया है। बट पता नहीं, पिछले सीजन में मुझे लगता था कि उसको चांसेस नहीं मिलते हैं, देखो। बट आई डोंट थिंक पिछले सीजन ना, चांसेस का था। ही वॉज लाइक अ हेडलेस चिकन, वो था, पर उसको हाँ। पता नहीं तो कर क्या रहा है। अब उसे पता है कि तुझे भाई ये वाला रोल अपना ढंग से करना है। एंड मुझे लगता है उसके पास जो फिजिकल कैपेबिलिटीज हैं और उसकी जो क्रॉसिंग एबिलिटी है, उसके हिसाब से ही हाँ। कैन बी अ वेरी गुड लेफ्ट बैक। फिजिकलिटी भी उस बंदे ने सही बना रखी है, तो वो अगर उस पर वर्क करेगा तो आराम से, मुझे लगता है वो जितना मेंडी धक्के धुक्के मार सकता है, उतना फ्रांगार से भी मार सकता है। यार देख, प्रॉब्लम ये है ना कि लास्ट सीजन, आई मीन एंcelotti की टीम में वही होता है कि तुम्हें वो जो करना है करने देता है, राइट? बट बट इस सीजन हम देख रहे हैं, अभी तक जितना भी देखा है, कि एवरी प्लेयर इज प्लेइंग टू देयर स्ट्रेंथ्स। ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो लगता है कि कोई और काम कर रहा है। तुम चामनी को उठा लो, उसने उसने ऐसी पोजीशन पे खिलाया उसको कि वो कभी सेंटर बैक बन जाता है, कभी सीडीएम बन जाता है। तो उसकी हाँ, स्ट्रेंथ पे चामनी हैज बीन द बेस्ट प्लेयर बट अलोंग विद बट देखो, गार्सिया। बात ये है कि अभी जावी के पास फुल स्क्वाड है, सब कुछ सही है, तो अभी देखो प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, इंजरी भी हो सकती है, तो फिर सीन चेंज हो हाँ, जाता है, फिर देखना ही पड़ेगा कैसे जावी उसके साथ अडेप्ट करता है। अब वो तो चलो बात की बात है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट उसने उससे क्वेश्चन भी पूछा था कि चामनी नहीं होगा तो कौन खेलेगा, तो आई थिंक ही इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर, ही इज गोना बी लाइक जिडान, ही विल रोटेट द टीम। सो चाहे इंजर भी हो जाए, वी विल हैव बैकअप्स। कामाविंगा आ जाएगा। बट द कामिंगा तो अभी पॉइंट तक इज दिखा कि ही नहीं है। इंजर्ड था ना, अभी हाँ अभी आया तो नहीं। इंजर्ड ही है ना। हम्म, आई तो गेस वो प्री सीजन में ही आएगा। वाल्वर्डे देख लो, वाल्वर्डे को कब देखा था? दो भाई गेम में देखो, 2 गोल मार वालवर्डे के दिए। लिए तो मैं इतना खुश हूं ना। मैंने पिछले हाँ, सीजन बोला था वालवर्डे को, बेचारे को तुमने एक जो मॉन्स्टर ट्रक का टायर है उसको हाँ, स्टेपनी बना रखा था भाई। एग्जैक्टली। जो और उससे भी जो वाल्वर्डे भाई मजदूरी करा रहे हो। बेलिंगम को देख लो भाई, बेलिंगम 100 इतना मिलियन सही का खेल रहा मजदूर। है। बेरिंगम लेफ्ट पे स्टेपनी बना हुआ है, वो राइट पे स्टेपनी बना हुआ है। मतलब तो आई थिंक फ्रान के साथ भी वही हुआ है कि फ्रान को अब बोल दिया है कि तू भाई इस तरीके से खेल, एंड उसकी स्ट्रेंथ पे खेल रहा है वो अब। और इनफैक्ट मेरे हिसाब से वो ट्रेंट ओवरऑल ऑलमोस्ट ट्रेंट से बेटर रहा है लास्ट 3-4 गेम्स भाई, में। फ्रान की सबसे बड़ी जो सही चीज है ना, वो है उसकी स्पीड। वर्क रेट। एग्जैक्टली। अगर उसको वो बताया जाए क्रिएटर तो ये स्पीड। करना है, इसके उसके रिकवरी रन्स हमारे बाल्डे जैसे हो सकते हैं, क्योंकि बाल्डे के पास भी स्पीड है। वो जैसे अपने रिकवरी रन करता है बाल्डे, जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी स्पीड की वजह से ही वो रिकवरी कर पाता है। तो फ्रांस के पास भी वो स्ट्रेंथ है भाई। कभी कभी मैं देखता हूँ एक डिफेंडर खड़ा हुआ है, भाई वो पिछले मैच में ही वीनी ने एक बॉल निकाली थी, वो भाई पीछे था डिफेंडर से, और वीनी ने बस थ्रू बॉल निकाली, फ्रांस भगा भगा पहुंच गया, उसको भाग के जाके क्रॉस भी डाल दिया उसने। भाई भाई सिर्फ लीव दैट। स्पीड की बात नहीं है, बिकॉज स्पीड तो मार्सेलो के पास भी थी। आई थिंक फ्रान के पास वर्क रेट भी है। हम्म। आई ना थिंक मार्सेलो की फ्रान का स्पीड वो इतनी नहीं थी, मुझे लगता है फ्रांस थोड़ा ज्यादा फास्ट है। बट ये है कि प्रॉबेबली, मार्सेलो के बट आई पास थिंक, प्लेयर इतना ज्यादा था ना, हाँ वो एग्जैक्टली। तो बहुत ही ज्यादा। फ्रैंक की एक चीज नोटिस करना, फ्रैंक की एक चीज वर्क नोटिस करना। वो विनी के साथ ना इन्वर्टेड चले जाएगा। ठीक है। इनफैक्ट विनी के आगे चले जाएगा, ओवरलैप कर देगा उसको। ठीक है। द मोमेंट ही लूजेस द बॉल एंड आपकी ब्लिंक ऑफ एन आई के अंदर वो वापस से आपको अपने डिफेंस पे मिलेगा तुरंत ही। लाइक ही डजंट मुझे ना, वेस्ट द मैं टाइम बताऊं फ्रान का मुझे सेकंड। क्या इश्यू है, कि फ्रान का ना बल्ब नहीं जलता। वो जाता है एक पोजीशन में, उसको उसके आगे पता नहीं है मुझे क्या करना है। ठीक है। वो मतलब जावी जैसा कोच मिला है जो तुम्हें बताता है कि कैसे खेलना है, वो दैट्स बता द। सकता है। मतलब मुझे लगता है फ्रान इज अ गुड, मतलब वो है ना, क्या कहते हैं यार, सैनिक बोलूं बॉल मतलब, कैरियर, प्रोग्रेसर हाँ, प्रोग्रेसर। प्यादा। फुटबॉल आईक्यू नहीं प्यादा। है, बट उसको जो हाँ, बोलोगे ना वो कर लेगा, वो बंदा है। एग्जैक्टली। ये नहीं हाँ। है कि उसको, अब जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि वो खड़ा होता है वीनी के आगे, और फिर उसको लगता है कि मैं अंदर जाऊं, मैं बॉल इधर दूं, और वो कंफ्यूज होकर क्या करता है, साइड पास कर बट देता है। अब इतने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि वो फॉलो हाँ, कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट उसका एक्सटर्नैलिटी ये भी है कि विनिसियस को स्पेस मिल रही है, क्योंकि अब फ्रैन आगे जाएगा
तो ऑब्वियसली हाँ, एक डिफेंडर को तो उसको कवर करना पड़ेगा, तो और विनिसियस मुझे के ऊपर लगता फिर है दो कि तीन नहीं चलते। जैसे जैसे जावी उसको बताएगा ना, क्योंकि उसके पास हम्म। स्किल और फिजिकल, तो उसको पता चलेगा कि मैं यहाँ से ये चीज भी कर सकता हूँ, तो उसका मुझे लगता है ही विल इम्प्रूव वेरी मच। अभी उसके पास एग्जैक्टली। वो वन ट्रिक पोनी रह गया था कि भाई आगे भाग के क्रॉस कर दो बस बस। आई आई थिंक उसकी सबसे बड़ी वीकनेस इन माय ओपिनियन इज वन ऑन वन डिफेंडिंग, जो मोंडी की बहुत सही है। तो हाँ ट्रू। वही है कि अगर मोंडी फ्री, इस कमेंट पे आते हैं कि मोंडी अगर थोड़ा फिट रहता है तो मोंडी शुड बी प्लेड इन लाइक ऐसे गेम्स जहाँ पे थोड़ा वन ऑन वन डिफेंडिंग चाहिए। डिफेंसिवली चाहिए, हाँ। भाई, एंड मोंडी मोंडी मैं बताऊं, पहले खिलाओ फ्रांस को 70 मिनट, फिर जब डिफेंड करना है मोंडी को भेज दो 70 मिनट के बाद। हाँ एग्जैक्टली, नहीं कुछ गेम्स में हो सकता है जैसे साका को डिफेंड करना है तो खिलाओ मोंडी को, ऐसे पर यार रफी देखो, यमाल को ये चीज भी तो तुम मानते हो कि जब तुम्हारा फुल बैक पिन करता है तो इधर विंगर की भी फटी रहती है कि मुझे भी उसको डिफेंड करना है। उस चीज का भी फर्क हम्म। पड़ता है यार। आई थिंक वो एंड ये बट चीज हमने देखी थी बार्सिलोना के अगेंस्ट, ये चीज देखी थी जब उनका पूरा लेफ्ट विंग हम पे वो कर रहा था फोर्स, लाइक फ्रैन वाज देयर, तो लमीन पुश करता था, तब तक पीछे से लेफ्ट पे कौन था उनका उस वक्त, आई गेस राइट। राइट पे, सॉरी हाँ राइट पे भाई कौन था, भाई बाल्डे तुम था लोग आई गेस। कैसे, मतलब देखो मैं मानता हूँ तुम लोग गोंजालो गार्सिया की ट्रेन पे एकदम लैंड करके चलने जाते हो, बट भाई तुम देखो तो तुम किससे कंपेयर कर रहे हो। पिछले सीजन उसने कितने गोल नेक्स्ट मारे तुमको पता है एम्बापे ने? नेक्स्ट गेम में तो आई थिंक गुंजालो ही खेलेगा, आई डोंट थिंक एम्बापे इज मैच फिट। मेरे ख्याल से वो सेमीफाइनल में आएगा एम्बापे। देखो आ जाए कोई बात नहीं, बट ये भूल जाओ कि तुम लोग, कि तुम्हें लग रहा है कि गोंजालो पूरे सीजन में तो उसको इतने चांस नहीं मिलने वाले भाई। आई थिंक वो रोटेट करेगा यार, आई थिंक वैसे ही होगा जैसे होजेलू का था ना, कि जैसी गेम हम्म। में एम्बापे विनीसियस गोल नहीं मार पा रहे तो वो गुंजालो को ले आएगा हाँ, बट ही विल और ऑल्सो चेंज करेगा, ऑलवेज बी अ बट ही सेकंड वोंट चॉइस। स्टार्ट। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बट स्टार्ट को दैट भूल शुड जाओ, बी तो मतलब मुझे लगता है वो खुद भी नहीं एक्सपेक्ट करता इतना जितना तुम लोग उससे हाँ, देने लगे। अगले वो गेम में खेल शायद पा रहा है, स्टार्ट उसने करेगा वो। 3 गोल मार दिए, उसका सोच रहा होगा बहन चो मजे आ गए। सही बता रहा नहीं हूँ। भाई, और खेल भी काफी सही रहा है, पर तो काफी हाँ, अच्छा है खेल भी कि काफी सही। किसी और। अबे देखो, बात ये है कि कुछ भी देखो, मैं प्री सीजन बोलना नहीं चाहता फीफा क्लब वर्ल्ड कप को, बट भाई ये ऐसा बहुत बार होता है कि इस टाइम पे जो यंगस्टर्स हैं उनको चांस मिलते हैं और फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, सीजन आगे बढ़ता रहता है। यार और बट फार्मर कौन? मेरे को नहीं लगता कि जाबी के साथ ऐसा होगा, बिकॉज नहीं, मुझे देख, मेरे को लगता है, मैं एक बात बताऊं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस रोल का प्लेयर ही नहीं है हमारे पास। द पॉइंट इज, और मुझे एक, लगता है कि एक ये एक तो पॉइंट ये है और तो। प्लस वो जानता है क्रिस्टिया प्लेयर्स को, हाँ वो इनको ट्रेन करके गया, मतलब आई थिंक जुवेनाइल में अब देखो, खेलता था मुझे उसके साथ। वो देख के पता चलेगा, अभी अभी शायद वो एंड्रिक के साथ रहा नहीं है, अब क्या पता वो एंड्रिक को खिलाए तो उसको कुछ और उसमें दिखाई दे, क्या पता उसको। अब देखो, एक टाइम पे बेंच स्ट्रेंथ तो तुम्हारी इतनी रह जाएगी ना, अब वो देखना है कि जावी किसके साथ जाता है, बट है मुझे लगता है अभी गोंजालो ने जितना स्कोर कर दिया तो एंड्रिक पैकिंग ऑर्डर में नीचे चला गया है और गोंजालो ऊपर हो गया। देखो यार, एंड्रिक को तो वैसे भी मेरे को लगता है क्रिस्टिया जाना चाहिए या फिर लोन पे चले जाना चाहिए, प्लेइंग टाइम के बिना। भाई हम ये भूल रहे हैं कि गोंजालो गार्सिया का क्रिस्टिया सीजन लास्ट ईयर वाज हिस्टोरिक, आई डोंट थिंक किसी और ने क्रिस्टिया में इतने गोल मारे जितने गोंजालो गार्सिया ने लास्ट सीजन मारे। तो हाँ हाँ, वो वाई तो है। भेजो एंड्रिक को क्रिस्टिया में खेलने दो, एंड गोंजालो को होजेलू टाइप रोल दे दो कि जब जब खिलाना हो एक एक्स्ट्रा भाई प्लेयर अपनी वो स्ट्राइकर टेंशन तो। फ्री हो गई भाई, अपने को चाहिए था स्ट्राइकर, अपने को जरूरत ही नहीं है, अपने को बंदा मिल गया एग्जैक्टली। घर में बैठा। हाँ, अपने को लेफ्ट बैक चाहिए था, अब अगर फैन इतना अच्छा खेल ले तो प्रॉब्ली नहीं लेंगे हम लेफ्ट बैक। भाई लेफ्ट बैक तो मुझे लगता है ले ही लेना चाहिए, मेंडी तो ज्यादा इंजर्ड अगर रहता है भाई। अगर मोंडी नहीं गया तो नहीं लेंगे। पर हाँ, पर मुझे बट लगता है वैसे ना, मॉन्टी, अभी क्योंकि जो कामिंगा भी है ही ना, कामिंगा कैन आल्सो प्ले करंट लेफ्ट बैक तो। सिचुएशन, देखते हैं। ये जो करंट सिचुएशन है ना जिसमें फ्रैंक गार्सिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्लब वुड हैव द अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएटिंग, लाइक अब हम अगर लेफ्ट बैक जाके मार्केट में नेगोशिएट करते हैं, सो अदर क्लब्स वुड आल्सो नो दैट कि इट्स नॉट लाइक वी आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू द लेफ्ट बैक, सो यार बेंफिका जैसे और पैसे मांग रही है, अब अगर और रियल भाई मैड्रिड को नहीं लेने होंगे तो नहीं देंगे। हाउसन, हाउसन तो क्या प्लेयर है। हॉयसन सही है भाई यार भाई। साहब
मतलब ऐसे लगता मुझे है लगता इट्स अ है डायरेक्टली स्टील हिट डील हो गया। 50 मिलियन। वो अभी अभी आया टीम में, ऐसा लगता है भाई वो 2 सीजन हाँ से खेल रहा है, जो जैसे भाई, जूड के लिए लगता था ना कि बॉल जूड के आया। लिए, बॉल पे इतना अच्छा है यार वो। भाई वो उसकी फटती नहीं है। रोटेशन। वो एंड में मैंने देखा बहुत बार उसको वो किया और वो एंड में बस टैकल मार देता है और बॉल बॉल तो क्लीनली विन करता है ना भाई, लंबी लंबी टांगों से। पर भाई यार पिछले गेम में सुधांशु भाई, प्रॉब्लम हो रही थी, चुआमेनी मिडल में खेल रहा था, एक हाँ चेंज किया अलोंसो ने कि चुआमेनी को राइट पे कर दिया और बीच में रूडिगर कर हाँ दिया, सब हाँ। सॉल्व हो गया भाई सेकंड हाफ में। यार वही तो अब ये देखने के लिए मिल रहा है भाई, जो हमें फर्स्ट लेग टू सेकंड लेग कोई चेंज नहीं दिखता था, अबे हमें मिड गेम वाटर ब्रेक के बाद चेंज दिख जाता है भाई, मतलब। अबे हाँ, एक तो मेरे को ना ये सीएट टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट नहीं समझ आता है इन लोगों का। भाई 5 मिनट का अगर ये लोग ब्रेक रखते हैं तो 4 मिनट हाँ एक्स्ट्रा टाइम एक्सटेंड कैसे कर हो सकते सकता है? हैं। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि बीच में कई बार प्लेयर्स रुक जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम हार्ड टैकल और स्टफ लाइक दैट। तो ये चीज भी मेरे को समझ नहीं आती। आई थिंक वो सब तो चल छोड़, बट आई थिंक द मेन अरे वो दोनों टीम के लिए ही है मेन यार। इशू इज कि यार रूडिगर, एक तो ऑरा फार्मर को पता नहीं क्या हो गया, अच्छा हुआ बेंच हो गया अब। दूसरा है कि अरे क्यों यार, रूडिगर रूडिगर भी थोड़ा आई थिंक वो मैच मिलिटाओ वाला लग रहा दिक्कत है कर रहा है, बिकॉज ओवर भाई कमिट। मैं तो मैं तो सोच रहा हूँ मिलिटाओ का क्या होगा भाई अब। यार दोनों टांगे अरे टूटी हुई है, यही क्या तो ही बात है। होगा दोनों, आलेबा और मिलिटाओ अभी मिलिटाओ। पता है भाई देखो आलाबा लास्ट का तो तो कैरियर रियल मैड्रिड में खत्म हो गया, क्योंकि वो तो सिर्फ एंचेलोटी बाय से ही खेल रहा था भाई। हाँ रॉड्रिगो और आलेबा अरे दो लोगों का करियर है हमने मेरे को लगता है। पर भाई आलाबा खेला है अलोंसो के साथ बैन में, तो वहां पे भी कुछ केमिस्ट्री होगी थोड़ी सी। घंटा। एपिसोड भाई एपिसोड एपिसोड जावी 3 में हम जावी लोग जावी ने एक मिनट। आ, हाँ, मैं कह रहा था कि एपिसोड 3 में हमने ये चीज डिस्कस करी थी। तो वी वर टॉकिंग, मेरे ख्याल से शांतु भाई और मैं ही यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास अगर इन केस कोई सेंटर बैक अभी इंजर्ड होता है तो कौन कौन से सेंटर बैक होंगे। एंड एट दैट पॉइंट हम भूल ही गए थे कि मिलिटाओ इज आल्सो इन द टीम। ये हालत है मिलिटाओ की अभी। मिलिटाओ, एलेबा, रूडिगर। यार अलावा ने तो मिलिटाओ का तो दो मतलब ये सीजन भी नहीं लगता है कि खेला है। अच्छा, एटलीस्ट सेंटर बैक तो अच्छा है। आलेबा ने एक सीजन दिया हमें, एक एक सीजन के भाई बाद। देखो देखो मिलिटाओ इज नॉट अ गुड मतलब बैड सेंटर बैक, वो जब तक इंजर्ड नहीं था वो ठीक खेलता हाँ था, ही वाज गुड। एग्जैक्टली बट ये एग्जैक्टली, है कि उसके अंदर ना गलती एरर, थी। वो एक एरर उस होता था। जैसे हाउसन के साथ ऐसा लगता है ना कि वो इससे गलती से मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक करता नहीं है। हाँ मिलिटाओ का लगता अब ये वाली में गलती करेगा करेगा या अगली वाली में करेगा, अबे भाई बच गया, इस पे नहीं करेगा। उसमें हमेशा पटी रहती थी। जैसे हाँ ट्रू केलर भाई, एग्री। नवाज के में भी हमेशा भाई, नवाज इतने सेव्स करता हाँ, था, इतने सेव्स बट करता वो था। एक गलती करेगा जिसकी वजह से। और बट तुमको लगता था जैसे वन ऑन वन सिचुएशन आई कोर्तुआ की, ठीक है, ऐसा लगता है चाहे वो बचा ना पाए कि वह कोर्तुआ तो रोक ही देगा। हाँ नवाज का लगता ये खा जाएगा, ये खा जाएगा, पर वो बचा लेता था, बट लगता में यही था कि ये खा जाएगा। और भाई जैसे कीपर के साथ जैसे आ जोड सकता है अच्छा बेलिंगम साला भागता है। गलती करे तो। भाई कोर्तुआ तो एनीवे, पिछले कोर्तुआ ने तो भाई, मतलब सीरियसली नॉयर को हमने इतना वो ज्यादा वो किया हुआ है भाई, कोर्तुआ को इतनी पीआर मिलनी चाहिए जितनी नॉयर को मिलती है भाई, क्या तो भाई इंसेन भाई लग वही रहा है। वाली बात है ना, किसी ने कहा कि ऐसा पहला गेम होगा कि दूसरी टीम का प्लेयर सेव कर रहा है गोलकीपर, हम लोग देख रहे हैं ओ 8-9 सेव कर दिए इसने, ये तो हम ही थे, ये तो हम हुआ और करते। भाई बॉल बॉल के साथ भी अच्छा हो रहा है, और जाबी के अंडर, क्योंकि एनीवेज ट्रेनिंग में एनीवेज जाबी उसको आउटफील्डर वॉलवर्डे आउटफील्डर की को तरह just शॉट खिला a रहा है। देखो minute. पता पिछले गेम में I will I क्या will बढ़ drop गया in, था उसे। guys. I will drop out. Sorry. Bye bye. हाँ हम It भी was a बंद nice करते हैं day. थोड़े टाइम। Yes. देखो वॉलवर्डे को तो पता नहीं कौन से शूटिंग Hala बुक देते, Madrid कह boys. रहा मार बहनचो जहां से मारना है मार। बाय राज, थैंक यू। Bye. वॉलवर्डे को तो अलोंसो ने बोल दिया जैसे ही तुझे इतना सा स्पेस मिले भर दे, क्योंकि भाई तेरा उसका भाई शॉट अगर ऑन टारगेट भी हो गया ना तो मैक्सिमम चांस है कि गोल हो जाएगा। भाई पूरा ऐसे लगता है कि वाल्वर्डे बिल्कुल चेंज प्लेयर, वापस जैसे पहले खेलता था वैसे लग रहा है बिल्कुल। अब तो क्रेजी। भाई कैप्टन आर्मबैंड भी सही लग रहा है, अब तो वॉलवर्डे का अब लग रहा है कि बंदा हाँ हाँ। बेचारे की मेरे को से वही लगती है कि उसके फोटोज निकाल रहा है कि गंजा हो रहा है वो, ट्विटर पे अब आ रही है कि गंज। टेंशन ज्यादा ले ली पिछले सीजन उसने एंचेलोटी के साथ।
और एक्चुअली कोर्टवा के पोस्ट मैच इंटरव्यूज कोर्टवा को ही भेजना चाहिए पोस्ट मैच इंटरव्यू कराने के लिए. सीधा 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 जवाब देता है वो. नो फिल्टर भाई. बुफॉन. भाई वो तो बुफॉन ही बन गया था भाई, उसको पता नहीं क्या हुआ था भाई. मतलब मैं मानता हूँ देखो सारे आउटसाइड द बॉक्स वाले शूट थे, बट भाई एक तो जाने देता. हाँ बट वही लग रहा था ना इस गेम में भी भाई कि 1-0 जीते बट पूरे कंट्रोल में थे हम. चांसेस बना रहे थे और कुड हैव इजीली बीन मोर एंड उनको कंट्रोल. आई डोंट थिंक फर्स्ट 30 मिनट्स में मे बी थोड़े चांसेस बने थे बट आफ्टर दैट तो हमने ही पूरा डोमिनेट किया. अगला गेम हमारा डॉर्टमुंड से है ना. हाँ भाई. ये सुधांशु भाई ये ना एक तो ट्विटर पे जो ये प्लेयर रैप वो होते हैं ना पेजेस उनको तो बिल्कुल ही फॉलो. उन्होंने फुटबॉल खराब करके रखा हुआ है कि मैं इस यू आर प्लेयर को रैप यू करता आर हूँ. यूजिंग ट्विटर. मैंने तो डिलीट कर दिया ट्विटर भी. ये तो भाई हमने कवर कर लिया. इम्प्रेस्ड की बात ही नहीं है, ये तो बंदा टीम में ही है भाई. ये एक तो भाई मैं ऐसे जेन्युइनली बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमारी टीम में अब थोड़े से मतलब ब्लैक्स और व्हाइट्स का रेशो भी ठीक हो गया. वो भी सही है. एक टाइम पे भाई सिर्फ एक ही चीज दिखती थी भाई, अरे क्या है ये स्पेनिश टीम है क्या है. एक्चुअली थोड़े स्पैनिश प्लेयर्स तो हुए हैं तो ब्लैक और व्हाइट का तो नहीं हाँ पता भाई. बट स्पैनिश प्लेयर्स तो होने चाहिए. और फार्मर ठीक कर ले बस. और फार्मर की भी कमी भाई बेचारा ही. अरे भाई पर उसने जिसको रेड दिया उसको, उसमें तो उसकी इतनी गलती थी नहीं भाई. आई डोंट थिंक वो रेड कार्ड था बट आई ऑल्सो थिंक कि वो गलतियां स्टिल कर रहा था तो आई थिंक रूडिगर का भी टाइम आएगा एक एक सीजन में तो अगर औरा फार्मर बैठे करे तो खेल सकता है वो. लेट्स सी. हितू भाई हमने ये डिस्कस कर लिया अगर फ्रैन ऐसा खेलता रहा आई डोंट थिंक मॉन्डी जाएगा इस सीजन तो अगर फ्रैन ऐसा खेलता रहा तो डाउटफुल है कि करेयास आएगा बिकॉज फ्रैन फ्रैन इज प्लेइंग अमेजिंग एंड अगेन अभी बोर्ड स्टिल उसी वो में है कि अगर जब तक जरूरत नहीं है प्लेयर की तब तक ना खरीदो. तब जैसे गुलेर अब खेलने लग गया मिडफील्ड में तो आई डोंट थिंक बेन स्टिलर या कोई भाई और या एंजेलो गुलेर का स्मिथ. ये रोल तो हमने पिछले सीजन के एंड में देख लिया था कि ही कैन प्ले दिस रोल, पर बहुत टाइम लगा दिया था. भाई वही तो प्रॉब्लम है एंचेलोटी को. रोड्रिगो को बेंच करने में टाइम लगा दिया. गुलेर को खिलाने में टाइम लगा दिया. अभी अभी तुम्हें पता वास्केस को नहीं है बेंच नहीं किया. कि अलोंसो रॉड्रिगो से क्या पता कोई ऐसा रोल खिलवा दे जहाँ पे रॉड्रिगो हो एकदम सकता एक्सेप्ट है. करे. हो सकता है बट इन माय ओपिनियन अभी वही रोल है उसका कि विनिसियस को जब सब आउट करना होगा तब आएगा रोड्रिगो. विनीशियस तो यार Which, भाई फर्स्ट हाफ में ठंडा था, सेकंड हाफ में तो विनीशियस ने फिर से भाई जो मचाना चालू किया. अगर एक दो एक्चुअली जब गोल पड़ा तो फिर जुवेंटस को थोड़ा बाहर आना पड़ा ना नहीं तो स्टार्टिंग से तो वो साला बस पार्क करके बैठे हुए थे. अनुराग भाई आई थिंक जुवेंटस डॉर्टमुंड के अगेंस्ट तो हमें जीतना चाहिए बिकॉज आई थिंक दे आर नॉट द सेम टीम एंड they look very beatable right now. Barely वो अभी 2-1 जीते मॉन्ट्रे से तो रियल मैड्रिड हैड hopefully. मेक अ यू टर्न ऑन रॉड्रिगो. क्या न्यूज आ रही है रियल मैड्रिड हेड कोच मेक अ यू टर्न ऑन रॉड्रिगो. किस डायरेक्शन में कि बाहर जाने के थे ना. अब नहीं जाएगा हम्म. पता नहीं. अब मुझे आई पता नहीं, थिंक मुझे लगता है हमें पता चल जाएगा क्लब वर्ल्ड कप के एंड तक. आई थिंक मेरा अभी का प्रेडिक्शन है कि वो आर्सेनल चला जाएगा अगर आर्सेनल पैसे दे दे तो. चले जाना चाहिए भाई, पैसे ले लो. जो भी नहीं खेल रहा अच्छा होता वैसे. भाई भाई वर्सेस भाई हो जाता. बट आई थिंक डॉर्टमुंड के अगेंस्ट जीत जाएंगे बट फिर मोस्ट प्रॉब्ली हमारा पीएसजी के साथ होगा विच इज द बिगेस्ट 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 टेस्ट. सो लेट्स सी. बट वही है यार कि अब लगता है कि फाइनली आई एम एक्साइटेड अबाउट वाचिंग रियल मैड्रिड प्ले अगेन कि हर मैच आता तो लगता है कि भाई हाँ आज रियल मैड्रिड का मैच है. वरना ऐसा लगता था भाई फिर से भाई बीटी आज होगी भी भाई. मैच है.
फिर से बीटी भाई, भाई फिर से सारे सारे हमारे गोल्स अभी तक टीम गोल्स हुए हैं, एक भी गोल इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं हुआ। आई लग थिंक भाई दैट्स पिछले गेम में इनफ। हो जाते, उसने लगने ही नहीं दिए बहनचोद। हाँ, तो वो भी ऑन पर्पस है भाई कि उसने बोला है मिडफील्डर्स को कि तुम शॉट लो, अगर हाँ हम चांस नहीं बना पा रहे तो शॉट लो। एक चामिनी का शॉट भी अच्छा था एक्चुअली जो नहीं गया था, हाँ, चामिनी को एक हेडर भी मारना चाहिए था। गुलेर का शॉट भी एक अच्छा था यार, गुलेर के भी दो एनीवे दो। यार पता नहीं, बायर्न आई डोंट थिंक जीत सकती है, बट मैंने अरे उनको भाई खेलते हुए नहीं देखा अभी। जीतेंगे तो पीएसजी को हरा के ही जीतेंगे, टेंशन मत लो। हाँ मतलब दो ही गोल कंसीड किए हैं और एक तो गलती से ही पड़ गया था वो, थोड़ा हाउसन ने अ, तो वॉल ही मार दी ना शायद बहनचोद। हाँ काफी सही था। हाउसिंग का शॉट्स अच्छे हैं भाई, उसने ऑलमोस्ट एक स्पेन के अगेंस्ट भी एक काफी सही, स्पेन के लिए भी एक काफी सही गोल मारा था जो ऑफसाइड हो गया था। तो हॉयसन इज काफी काफी गुड। रितु भाई अभी मान लो कि अगर रॉड्रिगो जाएगा तो चांस है किसी का आने का, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट लुक्स लाइक स्ट्राइकर चाहिए था, वो मिल गया हमें। लेफ्ट बैक चाहिए था, फ्रान गार्सिया अभी भी है। तो आई डू नॉट थिंक और कोई साइनिंग्स होगी until अनलेस रॉड्रिगो लीव्स। इफ रॉड्रिगो लीव्स हो सकता है, बट प्लीज डोंट फॉरगेट कि फ्रैंको भी आ रहा है तो ऑलरेडी रॉड्रिगो का रिप्लेसमेंट है, एंड इट्स नॉट क्लियर कि क्या क्या होगा। और राइट Uh, राइट तो हमारे पास जिंदगी में कभी था ही नहीं। हाँ करेयास सुधांशु भाई तभी आएगा जब बेंफिका थोड़ा प्राइस गिराएगी और मोंडी का कुछ होगा। अभी तो लग रहा है कि फ्रान इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फर्स्ट चॉइस बिटवीन मोंडी एंड फ्रान। तो लेट्स सी, थिंग्स कैन चेंज, बट क्लब वर्ल्ड कप के ऊपर ये काफी डिपेंड करता है कि अ, यार वो ऑरा फार्मर नहीं है भाई, उसमें है ऑरा, ऑरा हाँ भाई, प्रोड्यूसर है वो। अब तुम रोनाल्डो को हॉरर फार्मर बोलोगे क्या? ऐसी बात ऑरा मत किया फार्मर करो। है हमारा राहुल एसेंसियो जो सिर्फ ऑरा क्ले करता है, रोनाल्डो सिर्फ इज ऑरा रील्स भाई। प्ले करता अब रोनाल्डो को हॉरर फार्मर बोलोगे? जो बंदा है ऑरा तो है। है। चलो गाइस, फिर करते हैं बंद स्ट्रीम, हॉरर नेक्स्ट फार्मर वो मैच की होता बात है करेंगे। कैमरा ऑन होते ही। हाँ ये हमने बात किया था कि आर्डा का फिजिकलिटी और डिफेंसिवली थोड़ा वीक है अभी, तो अभी उसको भी और इम्प्रूव करना है, बट यार जावी ने ऑलरेडी सारे मिडफील्डर्स को इम्प्रूव करवा दिया है। तो आई एम 100% श्योर कि एज द सीजन गोज ऑन आवर मिडफील्डर्स विल गेट इवन मोर बेटर। अरे भाई आर्दा को थोड़ा मसल वसल गेन करेगा ना, अभी वो थोड़ा इम्प्रूव, अभी हाँ समझो अभी तीन ही है वो भी, आएगा थोड़ा। चलो उसकी गाइस। डाइट डाइट पे वर्क करना जरूरी है अभी। हाँ होगा होगा, इम्प्रूव तो करेगा आर्डा भी, और अभी तो कामाविंगा भी है जैसे भाई। अभी एकदम से ही भाई डोले शोले ऐसे आएगा तुमको एक दिन गुलेर। आओ। चलो गाइस, फिर करते हैं नेक्स्ट करो। डॉर्टमुंड के अगेंस्ट के बाद, डॉर्टमुंड के मैच के बाद करते हैं बात। ओके, चलो। सी यू गाइस, बाय बाय, अला मैड्रिड।